evaluate whether economic growth always leads to a balance of payment deficit. क्या क्या लिखोगे? First thing what I need to know is maximum information on economic growth. What can you tell me about economic growth? First, if you're just defining it in simple terms, usually it's about right? But this is something that you would have done in O level. Here, I would like for you to talk a little bit about this. Actual growth versus the potential growth. अब इसमें क्या है? Actual और growth और potential growth के अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है? What we know is कि जी actual growth के अंदर जो है हम बात कर रहे होते हैं when there is an increase in output. And that's happening in the short run. And this happens when there is usually an increase in aggregate demand. If you have to show it through diagram, this happens when you go from inside of PPC towards PPC, right? This is your actual growth that we're talking about. या फिर तुम अपना जब वो मॉडल बनाते हो इनकम एक्सपेंडिचर मॉडल, तो उसके अंदर जो है इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप नहीं हो सकता, बट द वन दैट यू गोना बी मेकिंग इज जिसके अंदर तुम एक सर्टेन लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव किया है और फिर किसी किस्म का इंजेक्शन आया है सी आई जी एक्स माइनस एम में से कोई विच विल कॉज एक्स माइनस एम टू शिफ्ट, ये इक्विलिब्रियम है और फिर जब ये ऊपर जाएगा तो उसकी वजह से ये नया इक्विलिब्रियम है एंड सो वी से कि एक्चुअल ग्रोथ हैज इंक्रीज्ड. ओके, inflationary deflationary gap can be used also, sure, but the main thing is that this needs to increase, AE needs to increase. Simply अगर तुम चाहो तो ADAS वाला डायग्राम भी कर सकते हो, but again I would recommend not to do diagrams for this one because the question's importance is much more something else. ऐसा ना हो कि तुम इसी के अंदर ही caught up हो जाओ और तुमको लगे कि I've written a lot, but honestly you want to cover all bases right now. फिर उसके बाद पोटेंशियल की बात करते हैं. हमें पता है पोटेंशियल जो है वो लॉन्ग रन की बात करता है. इट इज टॉकिंग अबाउट LRAS इंक्रीजिंग एंड shifting to the right. This is about the productive, this is nice word, productive capacity increase करने की बात हो रही है. And this happens when your PPC shifts outward. So that's a very nice, good details that you know what economic growth is. ठीक है जी. What else do we do? Well, economic growth की अब बस इतनी बात काफी है इस क्वेश्चन के लिए. The second part of this question is about your balance of payment and things about balance of payment. What do you know about balance of payment? तो फिर आप अपनी डिटेल्स के अंदर जाते हैं जी. बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या कहानी है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर देयर आर थ्री अकाउंट्स. देयर इज करंट अकाउंट, देयर इज कैपिटल अकाउंट एंड देयर इज फाइनेंशियल अकाउंट, राइट? एंड यू हैव अ बैलेंस ऑफ पेमेंट if the inflow is basically less and the outflows in this all is greater. तो you would see कि ये हमारे पास issue है. I would want to talk about a little bit about this कि current account के अंदर जो है trade in goods, trade in service, primary incomes
एंड सेकेंडरी इनकम्स भी होती है. शुड आई बी डिफाइनिंग देम रियली ब्रीफली इफ यू वांट टू, बट अगेन आई थिंक यहाँ पे जो हमें बात करनी है वो बात करनी है. Let's go back to the question for a second. Once you've done that, evaluate whether economic growth always leads to balance of payment deficit. Once I've basically done these terms, now to level up, because ये मेरा level 1, it seems like a level 1 answer for now. To level up, I would like to talk about economic growth की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट हो. ठीक है. So the next thing I will go into is uh, how economic growth will lead to balance of payment deficit. Let's see. I'm open to suggestions. Please feel free to add. What I'm thinking first is कि अगर economic growth हो रही है and it's happening because aggregate demand is increasing. Okay. और अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से इट्स क्वाइट पॉसिबल कि सप्लाई को जो है इंपोर्ट, बल्कि इस तरह से नहीं लिखेंगे. अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रहा है विच माइट कॉज द प्राइस टू राइज, राइट. खास तौर पे प्राइस ऑफ इंपोर्ट, सॉरी नहीं, just the price of goods to rise. What it might do is that it might encourage imports, right? Which would basically lead to your net export uh, x minus m to basically worsen, जिसकी वजह से current account will worsen, and then your BOP worsen. That could be one of the things. ठीक है. और ये तो एक्चुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, राइट, बिकॉज एडी ये इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एक्चुअल इंक्रीजिंग. वन यूर सजेस्टिंग इज अगेन एडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, बिल्कुल एक्चुअल और पोटेंशियल दोनों को लिंक करता है. तो इफ यू राइट इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेसिकली बैक्ड बाय इंक्रीज इन investment in imported capital, right? Imported capital goods. तो अगेन उसकी वजह से जो है इंपोर्ट इंक्रीज होगा, करंट अकाउंट एंड बीओपी is likely to worsen. That's also possible. Sometimes what happens is कि economic growth से इनकम्स ग्रो करती हैं, और जब इनकम्स ग्रो होती हैं तो इंपोर्ट ग्रो होता है. People like to buy imported stuff, right? So उससे भी करंट अकाउंट और बीओपी जो है वो वर्सन हो सकता है. So a few of these things. और कुछ, if you would want to suggest anything else you would like to suggest in this one कि किस तरह से economic growth might lead to BOP deficit. नहीं, कुछ भी नहीं. So how about inflation से we've made a connection to it. एक्सपोर्ट इंपोर्ट में से यू कैन, थोड़ा सा लॉन्ग शॉट जबरदस्ती बनाता हूँ, जरा देखो क्या करते हैं हम. सेम आइडिया,
इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, क्योंकि प्राइसेस बढ़ी थी और एक्सपोर्ट्स फॉल करी थी और इंपोर्ट्स बढ़ी थी, तो व्हाट इट माइट लीड टू डू इज दैट इट माइट फॉरेन करेंसी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से, ठीक है। और ये फॉरेन करेंसी वीक होने की वजह से, ना क्योंकि मुझे इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्सनिंग की तरफ लेके जाना है, तो डेट रिपेमेंट एक्सपेंसिव हो जाएगी। कौन से अकाउंट को जाके हिट करेगा? प्राइमरी इनकम वर्सन होगी, एंड देन इवेंचुअली बीओपी वर्सन होगा। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वन के बीओपी के कौन से अकाउंट को अफेक्ट करोगे, ठीक है। Yeah, we've written that economic growth will lead to more investment, उससे एडी बढ़ेगा। ओके, बिकॉज जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली हम कहते हैं कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है और फर्म जो है मशीन वगैरह एक्सपेंशन कर रही है, तो सी आई इज गोना गो अप, एडी इज गोइंग टू इंक्रीज टू द राइट। बट मैंने जब यहाँ पे इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स की बात की है कि आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो दैट विल टेक अ क्विक रूट टूवर्ड्स imports and then current account and balance of payment. It's up to you. There's plentiful things to write in this one. There's no limit to anything. But अब ये मेरा लेवल 2 के ऊपर आंसर किया है। अब मैंने इसको लेके जाना है लेवल 3 के ऊपर। ये बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट लीड नहीं करती। दैट इज नॉट माई वैल्यूएशन, that is me talking about the AO2 counter argument के economic growth will not lead to what are we connecting it with? POP deficit, sorry. Will not lead to POP deficit. Exchange rate devaluation, you asking, devaluation. Again, connection क्या है? Economic growth leading to balance of payment deficit. You can talk about everything, बट जब इसको डीवैल्यूएशन को फिट इन करना है बीच में से किसी तरीके से, हाउ यू सपोज टू डू दैट? अब अगर तुम कहते हो कि गवर्नमेंट आके डीवैल्यूएशन करती है, क्यों डीवैल्यूएट कर रही है? इकोनॉमिक ग्रोथ का डीवैल्यूएशन से लिंक और फिर डीवैल्यूएशन का लिंक बैलेंस ऑफ पेमेंट, इफ यू डू इट समहाउ, इफ यू आर एबल टू कनेक्ट इट, मुझे मसला नहीं है। बट द चेंज शुड बी, द कॉज इज इकोनॉमिक ग्रोथ, द एंड इफेक्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। come up with whatever way you can come up with कि ये इस तरह से ये चीजें हो सकती हैं। Economic growth leads to depletion of resources, which leads to shortage of raw material, which might lead to imports of raw material, and then balance of payment worsen. Do you see? कनेक्शन बना दोगे, मुझे कोई मसला नहीं है, किसी को कोई मसला नहीं है। इनफैक्ट क्रिएटिव होगे तो कोई मसला नहीं है। अब सर बात, ओके बोलो। सर हम ये लिख सकते हैं वो डेफिसिट वाले भी रीजन में कि वो जो ग्रोथ है वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की वजह से कॉज वो सॉरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से कॉज हो सकती है, जिस केस में वो फ्यूचर में डेफिसिट क्रिएट होगा क्योंकि प्रॉफिट और इंटरेस्ट के फॉर्म में मनी आउटफ्लो कर रहा हो। Right. So economic growth leads to an attractive investment opportunity for foreigners. They bring their foreign direct investments in the financial account. In the short run, the money will come in, improving the balance of payment deficit from finance. But in the long run, the money is going to leave the economy as primary income payments for those investments in your primary incomes of the current account and may create deficit.
बिल्कुल लिख सकते हो। और सर आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे, मुझे बहुत जरूरी जानना है। या ओके, थैंक यू सर। ओके जी। फिर उसके बाद आई थिंक यू रिटन दिस, वी नीड टू मेक श्योर कि तुम उस पॉइंट के ऊपर आओ L3 के लिए। सो इकोनॉमिक ग्रोथ विल नॉट वर्सन द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। इनफैक्ट ये जो अभी मैंने पिछला पॉइंट बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो है, economic growth increase countries GDP up, more likely to provide aids to other country, जिसकी वजह से money will go out in the secondary account of the current account। सही है, ठीक है। So economic growth leads to, so if economic growth is increasing, I'm just writing EG for economic growth. If this increases, chances are more foreign direct investments is going to come from abroad, which will improve the financial account and hence improve the balance of payment. ठीक है? At least in the short run. All right. फिर उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज अगर होती है, which means the output is increasing, which may cause exports to go up and imports to actually fall down. Why? Because country is producing more stuff. So why do I import? Let's have the same. पहले बाहर से wheat आ रहा था और अब मुल्क में प्रोड्यूस हो रहा है, तो imports में रिडक्शन आ जाएगी, and that actually improve the current account and may improve the balance of payment as well. You see, when you're writing this, you have to continuously make the connection to the last part of what we've been trying to achieve। ठीक है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, लॉन्ग शॉट। नाउ हियर्स एन आइडिया, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोग ज्यादा कमाएंगे, राइट? इट्स अ वेरी लॉन्ग शॉट बट श्योर, लेट्स गो फॉर इट। Economic growth increases, incomes go up, people get educated, and they get trainings, right? अब इसको मैं मल्टीपल डायरेक्शन में लेके जा सकता हूँ अब यहाँ से बात को। Aggregate supply increases, price falls, our goods become competitive, X minus M increases, and the balance of payment improves। Do you see that? चले जी। I could have gone from right here, I could have gone in another direction also. That people may migrate abroad for work and then they send income to the country, and that might increase your current account and eventually the balance of payment. Do you get it? So what I want to do is I want to talk about mostly whatever the stuff that can somehow have an effect on the current account। बिल्कुल बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखा है, राइट? देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखते हैं तो इसमें तो तुम्हारे पास तीन अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं, करंट, कैपिटल, फाइनेंशियल, राइट? कैपिटल अकाउंट में क्या हो सकता था? बीओपी डेफिसिट का मैं लिंक बना सकता हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू हायर इनकम, and then maybe people after earning higher incomes they will migrate to other countries taking their like savings and all, तो वो capital account में outflow create कर देता वो। जैसे पाकिस्तान से 7 लाख 8 लाख लोग अगर एक साल के अंदर लीव किए हैं, तो they've taken a lot of money with them। तो what would that do? That would create a capital account के अंदर outflow। So when they say balance of payment, there's so much you can write about। If they limit it to current account, then again मैंने जो majority बात ये की है वो सब current account से ही linked है। तो that is the direction you can go for।
सो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का के लिए जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से आ रहा है तो डेफिनेटली वो फिर इंपोर्ट इज मच रिस्पॉन्सिबल आल्सो एंड या श्योर डेफिनेटली दैट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट कि वो इंपोर्ट की वजह से तुम्हारा करंट अकाउंट में इफेक्ट आ सकता था यू कुड हैव स्पोकन अबाउट कि वो बाहर से रॉ मटेरियल आ रहा है और अगर आप वो गुड्स बना रहे हो और उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक तरफ इंपोर्ट हो रहा है लेकिन हायर वैल्यू पे एक्सपोर्ट हो रहा है तो हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव भी हो जाए बट आई थिंक नाउ आई एम गोइंग मोर टुवर्ड्स द इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट लेट मी गो बैक एंड सी कि मैंने इवैल्यूएशन करनी किस चीज की है ठीक है राइट सो देयर इज अ लॉन्ग मैसेज लेट मी जस्ट गो वन सेकंड ओके मैंने इवैल्यूएट क्या करना है इवैल्यूएट वेदर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलवेज leads to a balance of payment deficit. This is what I need to talk about. Will economic growth always lead to balance of payment deficit? I have to prove that no. मैंने वैसे तो काफी हद तक लिख दिया है that it will not. अब मैंने जो बेसिकली आंसर करना है अपने वैल्यूएशन में it is the word of always. Will it always? So let me talk about what we got to talk about is circumstances. ठीक है so in my evaluation, I want to talk about certain countries, let's say, like डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्या सिचुएशन होती है ठीक है अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसकी कॉज क्या है ज्यादातर तो इकोनॉमिक ग्रोथ राइज इज ड्यू टू expansionary policies like budget deficit, especially financed by foreign debt. Okay? This will have a short run inflow in financial account, but in the long run, it will lead to outflows in the current account. Okay? And then over time, debt payments increases such that government have very large deficit in the BOP. Do you understand? I'm not thinking about anything. I'm just talking about exactly what I've been talking to you guys all year round. In fact, for the last 2 years, I've been talking about this stuff with you guys. And that's what I'm thinking. अब that is just an evaluative start. अब इसके अलावा तुम और क्या evaluation दे सकते हो? Under what we've already spoken about certain circumstances. अब developing के तो हो गया, developed का क्या scenario होता है? अच्छा डेवलप्ड के अंदर भी देखो यू वांट टू टॉक अबाउट मे बी अ सिचुएशन ये सारा सिचुएशनल है ठीक है योर इवैल्यूएशन अबाउट दिस दैट विद वेदर इट विल ऑलवेज और नॉट
Like for example, when I say developed के केस के अंदर क्या होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है exports are of high value goods and services, while imports are cheaper. They have good, yeah, good से बेहतर है, favorable terms of trade. Therefore, these countries usually have surplus in their balance of payment, right? So finally, my essay should end with, in conclusion, economic growth. Yeah, this is exactly what I want to do. In conclusion, economic growth will not always lead to BOP deficit. They do like the discussion of short run, long run. I can think of another short run, long run. It's about कि किस तरीके से countries जो है economic growth achieve करने के लिए. I think that would be a very good one. I should have written that one in also. कि इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने के लिए अपनी पोटेंशियल बढ़ाने के लिए बाहर से कैपिटल गुड्स लेते हैं जिसकी वजह से टेम्पररी आपके पास आउटफ्लो या डेफिसिट क्रिएट हो रहा होता है बट इन द लॉन्ग रन व्हेन द कंट्री हैज फाउंड इट्स कंपैरेटिव एडवांटेज देन इट स्टार्ट सेलिंग अब्रॉड एंड you know then they relatively start improving their current account values and so in the long run it benefits. They prefer short run, long run situations. They prefer equilibrium के discussions. यहाँ पे नहीं है, but it's a very simple question. I feel it's a good question. I feel बिल्कुल बनता है इस तरह का कोई ना कोई question. So please make sure that you are well prepared for this particular topic का question. ठीक है? Let me take a look at another one here. Assess the extent to which the control of inflation can cause problems for other macroeconomic aims. Again, it just feels like I'm AS ka kar raha hoon, but what do you need for this one? Dekho bhai, what do you need for this one? 20 mark. L1, L2, L3. L3 के लिए क्या क्या होना चाहिए? Obviously, I always start off with this one. You want to talk about macroeconomic aims. Briefly, you talk about price stability. You talk about achieving full employment. You talk about sustainable economic growth. You talk about stable balance of payments, right? I think ये वाली majorly are the कर सकते हो चलो इससे भी connection बना लेंगे. Equity in income distribution. All right. So once you have these ones, अब क्या करोगे इसके अंदर? So once you've done this, अच्छी बात है, but the question is main about the extent to which you can control inflation
देखो जी, पहले तो फिर अब ज़रा कंट्रोल इन्फ्लेशन से पहले तो मैं इन्फ्लेशन को डिफाइन कर देते हैं ज़रा, ठीक है? कॉज ऑफ इन्फ्लेशन अगर तुम बता दो वेरी क्विकली कि ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की वजह से हो सकता है कि एडी बढ़ने की वजह से और एएस गिरने की वजह से। व्हेन यू कंट्रोल इन्फ्लेशन तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं? आई कैन गो फॉर contractionary fiscal and monetary पॉलिसी, जिसमें मैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर रहा हूँ, टैक्स बढ़ा रहा हूँ, मनी सप्लाई कम कर रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा हूँ। रिजल्ट इज एग्रीगेट डिमांड गोना fall and the problem that it will bring with it is enormous। एडी गिरेगा तो जी नुकसान क्या क्या है? Economic growth is likely to fall, employment is likely to fall, और क्या हो सकता है? Incomes are likely to fall, standard of living is going to fall। It brings some of these problems। इन problems को और थोड़ा extend करना है तो तुम उस पे भी जा सकते हो कि किस तरीके से foreign investment might not come into the country and that might weaken the currency। Your इन्फ्लेशन बेनिफिट्स, आई कैन सी अ फ्यू बेनिफिट्स। तो अब मुझे जब अगर इसको इसी आइडिया को काउंटर करना होगा फ्रॉम द बेनिफिट्स वाली साइड, तो बेनिफिट्स के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइस लेवल्स जो है वो नीचे गिरेंगे। हो सकता है कि एक्सपोर्ट्स ग्रो करें। व्हाई? बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग? बिकॉज जब फिजिकल कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी से एडी गिरेगा तो प्रोड्यूसर्स विल हैव नो चॉइस बट टू सेल द प्रोडक्ट अब्रॉड। इंपोर्ट्स माइट एक्चुअली फॉल। ये इस पॉलिसी को बाय द वे मैं अभी भी बता दूं कौन सी पॉलिसी होती है। दिस वन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी या डैम्पनिंग पॉलिसी। दिस वन इज कॉल्ड, तुम्हारे कोर्स का हिस्सा है। एंड ओवरऑल x माइनस एम इज गोइंग टू इम्प्रूव, जिसकी वजह से करंट अकाउंट इज लाइकली टू इम्प्रूव ऑल्सो। फिर एक कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन का एक थॉट प्रोसेस मेरा जो है, बाय द वे आई एम गोना रिमूव दैट, दिस शुड नॉट हैव बीन डिस्कस्ड। गलत डायरेक्शन में ऐसे निकल जाएगा इफ आई डू दिस, ठीक है? फिर उसके बाद कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन का जो हमारे पास दूसरी स्ट्रैटेजी होती है, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करने की स्ट्रैटेजी। So if aggregate supply increases, what are the problems that might happen as a result of aggregate supply increasing? Well, normally I see more advantages than disadvantages, but जब हम aggregate supply increase की बात करेंगे तो we can talk about कि ये aggregate supply increase हुई कैसे है। ठीक है, तो मे बी सब्सिडी वॉज गिवन, तो सब्सिडी की देर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व विद इट। या फिर अगर गवर्नमेंट ने इन डायरेक्ट टैक्स कम किया है तो अगेन देर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द रेवेन्यू दैट वाज बीइंग अर्न्ड from the taxes, which was gonna be spent on a lot of important stuff, maybe, right? तो ये हो गया। फिर उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई का इंक्रीज की जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी लॉन्ग रन पॉलिसी है। इट माइट टेक टाइम फॉर इट टू हैव एन इफेक्ट, बट फ्रॉम द बेनिफिट्स की साइड से तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। प्राइस गिरेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी,
अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और इंपोर्ट भी गिरेगा, और जिससे करंट अकाउंट अच्छा हो जाएगा. All of that can be discussed over here. So let me go back to the question for a second. Question कहता है, assess the extent, ये मेरी evaluation है, किस हद तक, to which the control of inflation can cause problems for other macroeconomic aims. I think मैंने अपने आंसर में other macroeconomic aims को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है. कंट्रोल के अंदर भी मैंने फायदे भी बताए हैं, नुकसान भी बताए हैं. कंट्रोल के जो दो पॉसिबल तरीके हैं, डिमांड और सप्लाई साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक आई कवर्ड दैट. आई थिंक दैट्स अ प्रीटी गुड डिसेंट इंफॉर्मेशन फॉर 14 मार्क्स. 12 भी अगर आ जाए, बिकॉज आई कवर्ड ऑल द साइड्स, तो लेवल 3 का आंसर तो है ये. ठीक हो गया. अब द इवैल्यूएशन इज अबाउट टू व्हाट एक्सटेंट. ठीक है जी. अब जहां पे ये एक्सटेंट की बात आ जाती है कि कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन किस हद तक, तो अब मैं यहां पे ये बात कर सकता हूं कि अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, ठीक है, अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है और मैं एग्रीगेट डिमांड को कम करके कंट्रोल करता हूं, ठीक है, थ्रू फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी. डायग्राम भी दिखाता हूं. इकोनॉमी इधर है, प्राइस लेवल्स, real GDP, economy is at potential. If I control inflation, will it bring problems with it? I don't see. Inflation भी बड़े अच्छे से कम होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स को भी कुछ नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, राइट. लेकिन अगर इकोनॉमी बिलो पोटेंशियल है और फिर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज होती है, तो फिर तो इन्फ्लेशन भी कट डाउन नहीं होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ. वैसे तो इस पॉइंट के ऊपर व्हाई वुड इवन द गवर्नमेंट कंसिडर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, बिकॉज दिस वुड सजेस्ट इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी एट अ वेरी लो लेवल, राइट. यहाँ पे ये बात हो सकती है कि इकोनॉमी अगर पोटेंशियल के ऊपर इधर है कहीं, और अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हो थ्रू सप्लाई साइड, so that would be a very good thing because it's going to expand the economy while reducing the inflation. So from that perspective, it would be a good thing. So all I'm trying to put out there is कि तुमने क्या करना है, extent के ऊपर बात करना है. To what extent controlling inflation can cause a problem for other macroeconomic aims. So in evaluation, I'm suggesting that it depends. ठीक है. uh, where the economy uh, stands at. फिर उसके अलावा अगर मैं इसको सिर्फ, अब मैं चाहूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसको हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट से करना है, या देयर इज अ नीड फॉर मी टू बैलेंस ऑफ. मैं करंट अकाउंट्स के साथ भी लिंक बना सकता हूँ इसका, कि मैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल जब करने जाता हूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है. यू रिमेंबर द फिलिप कर्व दैट वी हैव. तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा पूरा आंसर का डायरेक्शन फिलिप कर्व और वो जो ऑगमेंटेड या एक्सपेक्टेशन augmented Philip curve है, you can have a whole discussion on that because that's also part of macroeconomic aims. तो ये क्वेश्चन आप उधर भी लेके जा सकते हो और उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो. आई होप यू रिमेंबर व्हाट फिलिप कर्व वाज, एंड दैट गेट्स सॉर्ट ऑफ लाइक लिंक्ड टुवर्ड्स द एग्रीगेट डिमांड. कि जब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एडी को गिराते हो, तो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज कि प्राइसेस विल फॉल, बट अनफॉर्चुनेटली उसका ड्रॉबैक क्या होगा कि unemployment is going to start rising because there is a trade-off according to the Philip curve.
राइट। तो वो एक बात हो सकती है, यू कैन टेक। तुम चाहो तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल जो है उधर लेके चले जाओ करंट अकाउंट के साथ। इन इट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी, राइट। इन्फ्लेशन का लिंक, controlling inflation का link with PED for exports and PED for imports, Marshall Lerner's condition के साथ बात कर सकते हो, and whether how it would affect uh, the the current account. फिलिप कर्व ना, देखो फिलिप कर्व की मैं क्या बात कर रहा था कि इफ यू रिमेंबर दे यूज्ड टू बी अ फिलिप कर्व जो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को देखता था, एंड यूज्ड टू से दैट देयर इज अ शॉर्ट रन फिलिप कर्व में देयर इज अ ट्रेड ऑफ। तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर मैं एग्रीगेट डिमांड को गिराने की गिराता हूँ, एडी को मैं गिराता हूँ, तो एडी के गिरने से रिजल्ट क्या आता है? प्राइसेस फॉल्स डाउन, लेकिन एडी गिरा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ गिरी है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। So basically, you're going from point A to point B. So there is a trade-off that is being created over here, right? कि controlling inflation leads to more unemployment according to the Philip curve. So clearly we have a problem here, right? दूसरे macroeconomic aim के साथ it's creating an issue. That's all I'm talking about. इसको तुम elasticity के direction में लेके जा सकते हो. Again, this topic has so much stuff to write. Uh, that maximum you try to cover and you maximum you try to talk about stuff, और फिर आखिर के अंदर your main answer should be about extent to which the control of inflation will create problems. तो फिर उसके अंदर तुम extent की बात कर सकते हो in terms of employment levels, in terms of जो हमने बात की full employment and underemployment, right? And then in conclusion, normally high inflation needs to be controlled, right? I think that would be my conclusion, that if the inflation rate is on the higher side, then it needs to be controlled and it needs to be brought down. खासतौर पर अगर hyperinflation है, no matter what the other macroeconomic policy aims are being compromised, you know. But if it's not too much of inflation and you see that there is a big trade-off with the other macroeconomic objectives, so maybe inflation might become a little secondary and maybe economic growth might become your priority or something, right? So this is where this question is going to go. That's the direction it's going to take. I think, again, this question is not difficult. If you've done that chapters, the last 50 pages that I've talked about in the notes, honestly, तुम्हारा macro का एक मसला हल हो जाएगा, that you will be able to do one of these questions easily. कोई मसला ही नहीं होगा तुमको. Okay जी. Then we further move on and we look at another question here. कहते हैं, evaluate the view that the best way to control unemployment is to control inflation. ये तो पूरा सवाल ही फिलिप कर्व के ऊपर है. अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए. No, wait 1 second. Yeah, Philip curve will be your counter argument over here for AO2. I can think of more on the counter arguments in this one than four. पहले मैंने क्या करना है? ओके जी, पहले क्या करना है आपने? तो मेरे जीनियस बेस्ट वे, all these ये जो ये लोग करते हैं ना, ये normative statement, it's a normative statement, right? The best way to control unemployment is to control inflation. तो let's start by first unemployment. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कैसे होती है, इन्फ्लेशन क्या होती है? These look like yes questions. You're absolutely correct. But now the level of explanation that is required from you, the detailing that is required for a 20 marker in 40 minutes is much more comprehensive.
a good writing, a good essay, plenty of diagrams, support using the diagrams, explained diagrams. So it is all AS. Honestly, it's macro. What do you expect? Macro is this is what macro really is, you know. But remember, you've done a lot of macro के other economic growth and those gaps that we've done, the monetary fiscal policy that we've done, the monetary money supply का जो chapter है we've done. Those are there, you know. But then this is there as well. जो अब आ गया है, अभी तक तो वो क्वेश्चंस भी नहीं आए हैं जिसके अंदर तुम्हारे टॉपिक्स के, चलो एक हमने कर लिया जिसमें बीओपी आ गया है, बट फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग, और इसके ऊपर कुछ फिक्स वगैरह अब इधर आ गया है, इस चैप्टर के अंदर आ गया है, एंड इट्स पार्ट ऑफ एंड इट कनेक्ट टू द मैक्रो इकोनॉमी. You should be able to have a discussion on that as well, right? So you can define these. कुछ टाइप्स बता सकते हो, मेजर मेजर टाइप्स के ऊपर फोकस करो सिर्फ, बिकॉज आई थिंक दे विल बी यूज्ड, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फाइनली द cyclical. आई थिंक ये तुम्हारे मेजर इंपॉर्टेंट वन है. Evaluate the view that the best way to control unemployment is to control inflation. इन्फ्लेशन जब बताते हो और फिर जब कंट्रोल इन्फ्लेशन बताते हो तो यू टॉक अबाउट एग्रीगेट डिमांड गिराने के लिए योर मॉनेटरी पॉलिसी एंड योर फिस्कल पॉलिसी. फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शनरी साइड व्हाट यू कैन डू इज मनी सप्लाई को जो है कम किया जाए और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए, और yeah, that's how you go about it, and you're able to reduce aggregate demand, or you might even go for the supply side through deregulation and privatization and education and trainings and all of that. But that's just going to get you 5 months. The question is the view that the best way to control unemployment is to control inflation. कौन सी ADAS? What do you think? Think about it. What are they talking about? कि हाँ जी, the best way to control unemployment is to control inflation. तो ये किसके अंदर होगा? So मेरी नजर में, if you try to control inflation by increasing aggregate supply, what happens is that unemployment also falls down. I can use my diagram to support this view. ठीक है? Especially my LRAS वाली situation, sorry, my LRAS वाली situation where let's say the current economy, देखो control inflation क्यों करनी पड़ रही है? Because it has to be at the full employment level. Otherwise, why would you be even bother to price level here? Why would you even bother to control it otherwise? You know? So maybe the government has lost its mind. Maybe that still, they might have lower inflation and they might try to control it. So employment भी बढ़ रही है, full employment levels भी grow कर रहे हैं. So this is a very good policy, I would say. This is we talking about the supply side policy. If we're able to achieve supply side policy, um, we are able to do this, and that's good. But the drawbacks is again the way supply side here drawbacks that it might require financial assistance from the government. It might take longer period of time to have an effect. पूरी एक गवर्नमेंट इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज करने जा रही है. It's not an easy thing to do. It might actually backfire also. So there's plenty to write on KG, how effective this policy is going to be. It is a good policy, in my opinion. You're achieving two major good macroeconomic objectives. So why not?
But then I want to counter by saying if you try to reduce inflation by reducing aggregate demand, well, that's going to worsen employment. Okay, that means unemployment is actually going to go up. It's going to be effective. Matlab, prices will fall down, and in a less short period of time, but it will actually worsen employment. So definitely from that point of view, I feel that gee, this is not going to work for us, because if you think about it, if you're trying to control inflation by AD1, employment tends to go down, unfortunately. So that doesn't work for us. Okay, that sort of like goes against what the question is saying. And obviously that's going to happen through fiscal and monetary policy. And then this thing that we're trying to achieve is monetary policy and fiscal policy get through, which will be probably we would have had discussed it a little earlier, right? So inflation be okay, come ho gayi or unemployment be. So is it the best way? So now what you want to do is you want to have an evaluation. The thing is, again, monetary policy, fiscal policy, contractionary AD is being produced. So it's not really helping us. Is it the best way to control unemployment? The thing is, there was a reason why I spoke about this here. Frictional, structural, cyclical. If you notice, mostly unemployment को control inflation के through the two policies that I'm using, they're all about cyclical unemployment or might create cyclical unemployment. It has to do with economy slowing and whatever. What my evaluation I would talk about, because best way to कब किस केस के अंदर best way है ये, you know. So what my suggestion over here is going to be कि जब तुम evaluate कर रहे हो तो you would want to start off by saying that, you know, if you want to control unemployment, then you have to first figure out what is the cause of that unemployment. If unemployment is due to it's frictional unemployment, तो मुझे पता है frictional unemployment के अंदर तो information failure is the responsible thing, responsibility है उसकी. Seasonal unemployment will be more responsible over there. तो मैं तो ये बोलूंगा कि वहां पे अगर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है तो नंबर वन इट्स अ शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट. So, you know, there is not much need to sort of like try and control that. But even if you want to reduce it, you will actually have to go for an expansionary policy for that. So that contradicts कि कंट्रोल इन्फ्लेशन के तो ऑपोजिट जाना पड़ेगा, एडी बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए. या लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, उनको नौकरी ढूंढने के कोई सॉफ्टवेयर निकालोगे, कोई तरीके निकालोगे, उनके लिए दूसरी नौकरी ढूंढना आसान बनाओगे, उनको मल्टीपल प्रोफेशंस के अंदर ट्रेनिंग दोगे ताकि वो एक सीजन ऑफ हो तो दूसरे सीजन पे चले जाए. अगर स्ट्रक्चरल है तो उसका प्रॉब्लम रीजनल हो सकता है, या टेक्नोलॉजी हो सकता है, या इंडस्ट्री का चेंज होना हो सकता है. तो यू नीड टू रीट्रेन पीपल, यू हैव टू पुट मनी ओवर देयर. You know, controlling inflation has nothing to do really with that. You understand? So, in my opinion, your final evaluation is going to be about that it depends on the type of unemployment that is there in the economy. और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए तुमको स्पेसिफिक पॉलिसीज को यूज करना पड़ेगा. यू कांट बी लाइक के इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल हो जाएगी, एज डिस्कस्ड basically in the main structure of the essay, right? So that would be your evaluation for it.
बट डायरेक्शन समझो कि किस तरीके से हम किस डायरेक्शन के अंदर बात को लेके जा रहे हैं।